Good morning, students. In our yesterday class, we have completed exercise 6C till question number 13. Today we will complete this exercise, that is from question number 16 to 26 we will do today. But before starting these questions, just mark your homework for today. That is exercise 6C, question number 18, and from question number 21 to 24 you have to do. Clear? Now let's start question number 16. Question number 16 is find the product 24x square in the bracket 1 minus 2x and evaluate it for x equals to 2. That means in this question what you have to do, first of all you have to find out the product. Whatever we have done from question number 1 to question number 13, that you have to do first. Okay, and after doing that you will find out the value by putting x. जहाँ पर x होगा वहाँ पर आप 2 को पुट करोगे और फिर उसका वैल्यू फाइंड आउट करोगे. So how you will do this type of questions? Let's start doing. In my first step, I will multiply 24x square by 1 minus 2x. Now you all know how to multiply it. Whatever number is given outside the bracket, you will multiply one by one with inside the bracket. So first of all 24x square is given. So I will write 24x square into 1. Then plus into minus will become minus. And then 24x square into 2x. First I multiplied by 1 and then I multiplied by 2x. Clear? So my next step will be whatever number is given, that is 24 and 1, that I will multiply. So 24 1 ja will be 24 and then x square minus 24 2 ja. 24 2 ja will be 48. I have multiplied first what? First of all I have multiplied numbers and then I will multiply variable also, that is x square and x ki power 1. So this will become x cube. Yes or no? Now in my next step what I will do? I will just put the value. Okay? अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकती हूँ. आप लोग एक चीज कर सकते हो, जैसे 24 है और 48 है तो आप 24 कॉमन निकाल सकते हो. ये चीज आप कर सकते हो, लेकिन डेट विल बी कंफ्यूजिंग फॉर यू. सो आई एम डायरेक्टली पुटिंग द वैल्यू. ठीक है, तो 24, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? 2. सो 2 स्क्वायर minus 48, what is the value of x? 2 cube. So 24 into 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 minus 48 into 2 का क्यूब कितना हो गया? 8. Now 24 4 ja will be 96 minus 48 8 ja. 8 8 ja 64, 8 4 ja 32, 32 plus 6 will be 38. So 384. And when you subtract 384 and 96, your answer will come as 14 minus 6 8, 17 minus 9 will be 8 and 2. 288 will come, but remember that sign of the greater number you will put. यहाँ पर प्लस की साइन है, यहाँ पर माइनस की साइन है, तो विच साइन विल कम? साइन ऑफ 384. सो माई आंसर विल बी minus 288. Clear? So in this manner you are going to do all this question. That is question number 16 to question number 19. Now question number 17.
Now in question number 17, again you have to find the product. So first of all, I will write AB and A square plus B square. What is given in the question? In the question they have given you find the product AB in the bracket A square plus B square, and then you have to evaluate by putting the value, that is A equals to 2 and B equals to 1 upon 2. So first of all we will multiply this. So AB into A square plus AB into B square. Now here 1 1 जब 1 आएगा तो वो लिखने की जरूरत नहीं है. Next will be variable, that is A and A square. So this will become A cube B. Clear? Plus A is not there, so I will write A alone, and then B into B square will become B cube. Now I will put the value. So in my next step I will write 2 cube into 1 upon 2 plus 2 into B, that is 1 upon 2 cube. Clear? Now either you can multiply and then write, or you can just simply open it, that is you can write 2 into 2 into 2 3 times. It depends on you. मैं यहाँ पर आंसर फाइंड आउट नहीं कर रही हूँ, जैसे मैं 8 नहीं लिख रही हूँ, मैं यहाँ पर 2 into 2 into 2 कर रही हूँ. और रीज़न बिहाइंड दिस इज दैट कि मुझे यहाँ पर 2 दिख रहा है जो डायरेक्टली कैंसिल हो सकता है, डेट इज वाई. ठीक है, अगर आप 8 लिख कर भी कैंसिल करते हो तो भी वो ही आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा. सो यू कैन डू इन बोथ द वेज. ओके, प्लस 2 into 1 upon 2 into 1 upon 2 into 1 upon 2. Now I can cancel this and this and this and this. So my answer will be 2 2 ja 4, 4 1 ja 4, 4 plus 1 upon 4. Now you can add this. So when there is nothing, so I will write 1, and here also since आप लिख सकते हो, since LCM will be 4, तो into 4 into 4, so 4 4 ja will be 16 upon 4 plus 1 upon 4. So 16 plus 1 upon 4 equals to 16 plus 1 will be 17. 17 upon 4, and then I can convert this into mixed fraction also. So this will become 4 4 ja 16 and 1. So my final answer will be 4 1 by 4. Clear? Okay, so this was question number 17. Now question number 18 is your homework. I am doing question number 19. Now my next question is question number 19. In question number 19, what they have given you? They have given you that find the product minus 3y in the bracket xy plus y square and finds the value for x equals to 4 and y equals to 5. So in the same manner we will find out the product, but remember that there is negative sign over here. So be careful when you do any questions related to minus sign. Whenever there is minus sign na, so you have to be little bit more careful while doing such type of questions. So first of all, I will write minus 3y in the bracket xy plus y square. Then I will open the bracket, so I will multiply minus 3y into xy, then plus minus into plus will become minus, so I will write minus, and then 3y into y square. Okay, clear? Now minus 3 into 1 will be minus 3, then x, and then y का square.
क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है. सो वाई स्क्वायर आ जाएगा -3y³. नाउ आई विल पुट द वैल्यूज. सो -3 into x into y, that is 5 into 5, -3 into 5 into 5 into 5. So 3 4 ja will be 12 and 12 25. 25 12 ja will be 5 2 ja 10, 2 2 ja 4 5, 5 1 ja 5, 2 1 ja 2. So my answer will be 300. -300 will come. Then again minus sign I will write, and 5 5 ja 25, 25 5 ja 125, and 125 3 ja will be 5 3 ja 15, 3 2 ja 6 7, and 3 1 ja 3. So 375. And then minus into minus will become plus. That means I will add this. And 300 plus 375 will be 675, and sign of the greater number, that is minus. So minus 675 will be my answer. Clear? So in this manner you will do this type of question. Now the simplify questions I will do. So question number 20, question number 25th and 26th I will do here. The rest question, that is from question number 21 to 24, you will do on your own. So let's start doing question number 20. Now in this type of questions you have to multiply all the variables or all the things whatever given in the question, and then we will see. That means you have to just simplify the question. Okay, so first I will do this portion, then I will do this portion, and then I will do this portion. So A into B, if you want to do directly you can do directly also, but for some students I am doing the whole procedure, that means the lengthy procedure I am doing. So first of all I will multiply A into B and then A into C. So A into B minus A into C plus B into C minus B into A plus C into A minus C into B. Now whatever multiplication portion is there now, that you will solve. So A into B will become AB minus A into C will become AC plus B into C will become BC minus B into A. B into A को आप BA भी लिख सकते हो और AB भी लिख सकते हो. So I am writing AB plus C A तो AC minus BC. क्लियर? अब बहुत केयरफुली देखना, जो भी लाइक टर्म्स हैं उनको या तो आप अरेंज कर लो एक साथ, या फिर आप ऐसे भी कैंसिल आउट कर सकते हो. जैसे ये प्लस ए बी है और ये माइनस ए बी है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस. तो जब भी लाइक टर्म्स रहते हैं और सेम रहते हैं और प्लस और माइनस रहते हैं तो वी कैन डायरेक्टली कैंसिल इट आउट. लेकिन ये आप लोगों के लिए मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम है, तो मैं आप लोगों को यही एडवाइस दूंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अरेंज करो लाइक टर्म्स को, जैसे आप हमेशा करते हो, जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में किया था उसी तरीके से. तो यहाँ पर मैं लाइक टर्म्स दैट इज ए बी माइनस ए बी ले लूँगी. यहाँ पर क्या है? माइनस ए सी प्लस ए सी एंड देन प्लस बी सी एंड माइनस बी सी. नाउ व्हेन यू सॉल्व दिस, ए बी माइनस ए बी क्या हो जाएगा? 0, कैंसिल. माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, दैट मीन्स माई आंसर विल बी 0. My final answer will be 0. Clear? So in this manner you are going to do. Now next is question number 25th. Now next question is question number 25th. Here the question is a square b a minus b square plus ab square in the bracket 4ab minus 2a square minus a cube b and in the bracket 1 minus 2b.
So one by one I will multiply bracket and out whatever given outside the bracket. So first of all I will multiply a square b into a and then a square b into b square. So a square b into a plus into minus minus a square b into b square. Okay, now come to second one, that is plus. So plus into plus plus, so plus ab square into 4ab plus into minus minus, so again ab square into 2a square. Clear? Now here minus into plus will become minus. So minus a cube b into 1. Then again be careful, minus sign है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. प्लस ए क्यूब बी इंटू 2b. क्लियर? दैट मीन्स प्लस साइन के लिए आपको इतना केयरफुल होने की जरूरत नहीं है, सेम साइन आ जाती है. लेकिन इन केस ऑफ नेगेटिव साइन ना यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल. नाउ वन बाय वन आई विल मल्टीप्लाई ऑल दिस. So here a square into a will be a cube b आ जाएगा. माइनस है तो माइनस की साइन. a स्क्वायर अकेला है तो राइट डाउन a स्क्वायर एंड देन b क्यूब. देन प्लस 4 1 जा 4 एंड देन a स्क्वायर एंड देन b क्यूब. माइनस 2 1 जा 2. a square into a will be a cube and b square. After that minus a cube b plus 2 1 ja 2 a cube b square. Now take all the like terms together. जैसे यहाँ पर a cube b है तो यहाँ पर ढूंढो ए क्यूब बी कौन सा है, ये है. सो माइनस ए क्यूब बी. नेक्स्ट माइनस ए स्क्वायर बी क्यूब. तो एक तो ये आ जाएगा प्लस 4 ए स्क्वायर बी क्यूब. और है नहीं, और नहीं है. ठीक है. और लास्ट में आ जाएगा आपका ये माइनस 2 ए क्यूब बी स्क्वायर plus 2a cube b square. Correct? Now this plus into minus will cancel. ठीक है. और ये भी कैंसिल हो रहा है. देखो -2 + 2 तो माइनस इंटू प्लस माइनस, तो इसको भी आप कैंसिल कर दोगे. बचेगा क्या, ये. सो माइनस इंटू प्लस विल बिकम माइनस. तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है. तो 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3. 3a square b cube and sign of the greater number, that is plus के sign. So my final answer will be 3a square b cube. So this was question number 25th and the last question for today is question number 26th. Now student, question number 26. Question number 26 is 4st in the bracket s minus c, then minus 6s square in the bracket t minus t square, then minus 3t square in the bracket 2s square minus s, and plus 2st in the bracket s minus t. Now we will open the bracket and multiply all the like terms or unlike terms, whatever given outside the bracket and inside the bracket. So 4st into s minus 4st into t. Be careful regarding negative sign. Minus into plus will become minus. So minus 6s square into t. After that minus into minus will become plus. So I will write plus 6s square into t square. Clear?
आफ्टर दैट दिस अगेन माइनस साइन है तो थोड़ा सा केयरफुल रहना. माइनस इंटू प्लस विल बिकम माइनस. सो माइनस 3t square into 2s square. Then again minus into minus will become plus. So plus 3t square into s. Again plus into plus. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. 2st into s and then plus into minus minus. So minus 2st into t. ठीक है. Now I will multiply all this. 4 into 1 will be 4. S into s will be s square t. Minus 4 into 1 4. S t into t will be t square. Minus 6 into 1 will be 6. Then s square t. Plus 6 into 1 will be 6. Then s square t square. Then again minus 3 to just 6. Either you can write t square s square or you can write s square t square. It is one and the same. Then plus 3 1 ja 3. Either you can write s t square or t square s. It is one and the same. Why I am writing like this? ताकि हमें like terms मिल जाए. ठीक है. That is why I am writing like this. Then plus 2s square and t minus 2s t square. Clear? Now my next step will be to arrange them in like terms. So इस s square t है तो ये लोगे और है yes ये है. So just take it 4s square t then minus 6s square t plus 2s square t. After that minus 4st square. So minus 4st square. After that this one plus 3st square and this one minus 2st square. Clear? After that third one that is s square t square. ठीक है. ये हमारा सेकंड वाला था जिसको मैं डबल अंडरलाइन कर रही हूँ. लाइक टर्म्स है जो. ठीक है. और थर्ड वन है 6s square t square minus 6s square t square. So plus 6s square t square minus 6s square t square. Now जो भी लाइक टर्म्स है उसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है आपको. ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे. प्लस इंटू माइनस विल बिकम माइनस. सो दिस विल गेट कैंसिल. क्लियर? ये बचा और ये वाला बचा. अब देखो 4 माइनस 6 कितना हो रहा है 2 हो रहा है और साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर है दैट इज -2. ध्यान से सुनना. ठीक है. अगर ऐसे नहीं आए तो रफ में आप ऐसे करके देख सकते हो. 4 माइनस 6 प्लस 2 तो 4 माइनस 6 कितना हो गया -2 हो गया और -2 प्लस 2 कितना हो गया 0 हो गया. ऐसे आप रफ में करके देख सकते हो. मैं डायरेक्टली आपको बता रही हूँ. मेंटली करना सीखो. मैथ्स में क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे. सो 4 माइनस 6 विल बी -2 एंड -2 प्लस 2 विल बिकम 0. दैट मीन्स फाइनली ये तीनों कैंसिल हो रहे हैं. यहाँ पर आपका आंसर 0 आ गया. अब क्या बचा -4 प्लस 3 एंड -2. तो -4 प्लस 3 एंड -2. माइनस इंटू प्लस विल बिकम माइनस. सो 4 माइनस 3 कितना हो गया 1 और साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर.
that is minus sign, minus 1 and this is minus 2. So minus into minus will become plus, that is 2 plus 1 3 and sign of the greater number. तो minus 3 आ गया. That means इसका आंसर क्या होना चाहिए? minus 3st square. That means your final answer will be minus 3st square. I hope you all got it. ठीक है? So you have to do question number 21 to 24 in this manner only. This much is for today. We will continue with our exercise 6C from tomorrow. Thank you.